Dharmendra Pradhan, the education minister, he finally resigned. What's your take? And today you made a very big announcements also. See, it was regarding expanding of the Andolan, and that is what I spoke just a few hours ago. That you should now take this, you should create a new sub-centers. Delhi Jantar Mantar is a sub-center. The other sub-center should be the residence of those elected parliament members and Rajya Sabha members. The government has now, government has directed, or Mr. Pradhan has given it on his own, is a question mark. We do not know. Whether the Prime Minister has accepted the resignation or not, there is still a question mark. Secondly, the students are talking about the system also, improvement of the system. That system has not been addressed. That needs to be addressed, and I think so there are indications which are coming across that unless the government starts addressing the system, there are some hints I feel that the Andolan might not stop here with the resignation of Dharmendra Pradhan. See, why centralize education? And why centralize examination? Earlier, education was a state subject. Now you have brought it into concurrent list. What we are now demanding is that NEET should be decentralized. It should be abolished. And state should be made responsible for the students' future, not the central government. So that is the direction I think so in which this movement will move ahead. Whom you give credit for this resignation? Yeah, it's a Andolan's credit that everybody joined in, and so it's not one person's credit, I would say, but it was a student's credit who joined everywhere on their own. Your take on this resignation? What government must have thought to ask for me the voluntarily resigned? See, the question was that this movement was expanding, and in the afternoon press conference, which I said that there should be sub-centers for this movement, and the sub-centers should be the residence of the elected members of parliament. Unless they speak for the people, if they don't speak, then the students should do dharna before their houses so that they understand their responsibility. There are news which I have been hearing is that Dharmendra's resignation is not going to address the corruption within the system. So the system needs to be addressed. One. Second is those students who were lathi charge by the police. They need to be, action needs to be taken care on that. Lastly, I would say that why centralize education and examination? Earlier, education was a state subject. And during those periods, we didn't have any trouble. So the NEET should be abolished and education should be decentralized and state should be made responsible for the education. So now the movement should be like halted, stopped, or what would you? I don't see the movement stopping at this stage. Because there are voices which are saying that, yes, corruption issue was major issue, which they held Dharmendra Pradhan as responsible. But they said the system is also corrupt. So the corruption within the system needs to be addressed, and the corruption within the system can be addressed only by decentralization and abolition of NEET. So that I think so these two demands will come ahead. Okay. I see. Sir, उनका इस्तीफे को क्योंकि आप भी उनमें से हैं जो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. देखिए, हम एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन मांग रहे थे क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से ही करप्शन शुरुआत हुआ था और पेपर लीक की बात वहाँ पर हुई थी. अब उनका रिजिग्नेशन उन्होंने दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा ये सबसे बड़ा सवाल है. जब तक प्राइम मिनिस्टर स्वीकारते नहीं तब तक मैं समझता हूँ
कि इशू ये जिंदा रहेगा। पार्लियामेंट इन सेशन होने की वजह से एनी अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्ट्री हैज टू बी मेड इन द हाउस इटसेल्फ। वो हाउस के बाहर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सोमवार तक हम लोग को रुकना होगा कि या 3 साढ़े 3 बजे का समय जो दिया था उस 3 साढ़े 3 बजे के समय में रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है करके अगर और प्रेसिडेंट को भेजा है, ये अगर न्यूज़ आती है तो शायद मेरे ख्याल से ये सरकार ने स्वीकार लिया। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात जो है को जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ उसका क्या है? जानबूझ के जो पुलिसों ने किया उसकी इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? विड्रॉल ऑफ केसेस जो है जिसको इन्होंने मंजूर कर लिया है। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल है कि सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन करने से जो दिक्कतें आ रही है क्या उसको आप एड्रेस करेंगे? हमारी मांग ये है कि नीट जो है एबॉलिश होनी चाहिए, एजुकेशन शुड बी डिसेंट्रलाइज। पहला जो था कि एजुकेशन वाज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट ही रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मांग जो है मुझे सोशल मीडिया पे जो है जो विद्यार्थी है उनसे दिखाई दे रही है और हो सकता है कि उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी ये छात्रों की बड़ी जीत कही जाएगी इसको, या ये छात्रों की सभी छात्रों की जीत है। ये बड़ी जीत है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को झुका दिया और कहा दिया कि तुम ना भगवान हो ना कुछ हो, इंसान हो सिर्फ। आपको लगता है अब ये फिर सारा जो प्रोटेस्ट मुझे जो दिखाई दे रहा है जो छोटी छोटी आवाजें निकल रही है उसमें से कि भैया धर्मेंद्र प्रधान से हमारा समाधान नहीं होगा। सिस्टम सुधारने की बात सरकार करेगी या नहीं करेगी? और सिस्टम सुधारना है तो मैंने जैसे कहा कि नीट को एबॉलिश करना होगा। क्या ये सरकार नीट एबॉलिश करेगी? और इन बच्चों ने अगर उसको जिद पकड़ ली कि नीट एबॉलिश करो, हमारे स्टेट में ही है, हमारे एग्जामिनेशन ले लो और वहीं पे फैसला होगा सही या गलत का, तो ये भूमिका आ सकती है आगे ऐसा मुझे लगता है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।